Okay. So we have the chapter, The Adventure over here, which is written by Jayant Narlikar. Okay. In this chapter, what we are gonna see कि पुणे से लेकर बॉम्बे तक जा रही है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डेक्कन क्वीन. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed ways was no different from what he knew. जो लोनावाला पहला स्टेशन था दैट केम इन अबाउट 40 मिनट्स और जो घाट स्टेशन था वो बिल्कुल सेम था, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट उस पर उसको लगा नहीं. द ट्रेन रोड करा, इसका मतलब कि उसने और भी ज़्यादा जो स्पीड है वो पकड़ ली. Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. जो गायतोंडे जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं उनको लगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पहले सोच लेना चाहिए, और यहाँ पे इनका जो ऑक्यूपेशन है वो हिस्टोरियन दिया है. He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. अब ये जो है ना चीज़ें अब नॉर्मल लग रही हैं, मतलब नॉर्मल नहीं लग रही है, तो इन्होंने डिसाइड करा है कि मैं हिस्ट्री की बुक्स में देखूंगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. That is, assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. The train stopped beyond the long tunnel. अब क्या हुआ है? Meanwhile, जो हिस्टोरियन है गायतोंडे, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने टाइम ट्रैवल कर दिया है, और ये अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो वापस से पुणे जाएंगे. पुणे में ये राजेंद्र देश पांडे से मिलेंगे. ये कौन है? ये इनके मित्र हैं, तो उनसे ये मिलेंगे. It was a small station called Sarhad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. वो एक स्टेशन में पहुंच गए जिसका नाम सरहद है, और यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन था जो कि हर एक टिकट विकेट ऐसे काम चेक वेक कर रहा था. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume, खान साहब asked. इनसे कहा जा रहा है कि यहाँ से ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है और शायद आप पहली बार आ रहे हो. तो ये कहते हैं कि हाँ. Gangadhar Pant had not been to this Bombay before. He ventured a question, and Khan Sahib, how will you go to Peshwa? This train goes to the Victorial terminus. अब जो गंगाधर पंत है, यहाँ पे गायतोंडे का ही नाम गंगाधर पंत है, ये इस वाले बॉम्बे में पहली बार आ रहे हैं, तो ये पूछते हैं कि पेशवार आप कैसे जाओगे. तो वो बताते हैं कि ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस को जाती है. विक्टोरिया टर्मिनस को आज हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं. आई विल टेक बोलते हैं कि मैं जो हूँ आज रात को ही सेंट्रल के लिए निकल जाऊंगा. तो वो पूछते कितनी दूर तक जा. लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर, फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वॉज सो डिफरेंट. अब दोनों में बातें हो रही. खान साहब उन्हें अपने बिजनेस के बारे में, थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं जो कि अभी के वर्ल्ड, अभी के इंडिया से काफ़ी अलग है. The train now passed through the submarine traffic. The blue carriage carried the letters GBMR on the side. Greater Bombay Metropolitan Railway, explained Khan Sahib. जो ट्रेन है वो कुछ ट्रैफिक से पास करती है और हर एक मतलब कैरियज में लेटर्स लिखे हैं GBMR. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जो कि खान साहब ने बताया. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, which was Victoria Terminus. ये कहता है कि क्या तुम्हें वो छोटा सा यूनियन जैक का वो सिंबल देखने को मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंडर पे चल रहे हैं. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis, along with a handful of British officers. जो ट्रेन है ये रुक जाती है विक्टोरिया टर्मिनस पे. यहाँ पे बहुत सारे पारसीज, हैंडफुल ऑफ इंडियंस के साथ होते हैं. उसके बाद क्या होता है? As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark: East India House, headquarters of the East India Company.
Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. अब ट्रेन रुक गई और गंगाधर पंत जो है ये एक बिल्डिंग की तरफ को देखते जिस पे लिखा है ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर। तो बहुत सारे शौक के लिए ये प्रिपेयर थे लेकिन इसके लिए नहीं। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वोन्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग। अब 1857 के बाद हमको पता है जो रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ठप पड़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत अच्छे से चल रही थी। So history had taken a different turn, perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to figure out. इसका मतलब यहाँ पे हिस्ट्री जो है उसने कुछ टर्न दिया है, तो कैसे और क्यों ये उसे जानना था। ठीक, everybody will listen to me very carefully, very gently. As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building. जैसे जैसे ये रास्ते में चलते रहे इनको कोई भी हैंडलूम बिल्डिंग नहीं मिली और बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिस शॉप ये सब देखने को मिले. Instead, there were booths and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyds, Barclays, and the other British banks, as in a typical high street of a town in England. He turned right along Home Street and entered Forbes building. अब क्या है यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है पूरी स्ट्रीट जो है वो लंदन की टाइप की, इंडियन वाइब्स ही नहीं आ रही है. आई विश टू मीट मिस्टर विजय गायतोंटे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. इन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपने बेटे से मिलता हूँ इस दुनिया में, तो ये जा रहे हैं और जो रिसेप्शनिस्ट है वो इंग्लिश है तो वो सारी चीज़ें देख रही है. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? तो वो कहती है मुझे तो मिल नहीं रहा है, क्या तुम श्योर हो वो यहीं वर्क करता है? वो कहते हैं कि ठीक है, तो थैंक यू बोलते हैं लड़की को और वो बाहर निकल जाते हैं. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library. अब ये खाना खाने के बाद टाउन हॉल में जा रहे हैं जहाँ पे लाइब्रेरी है. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. His 5 volumes duly arrived on his table. 5 books इन्होंने अपनी मंगाई. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka, Volume 2 up to Samudragupta, Volume 3 up to Muhammad Ghori, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. सारी ये जो बुक्स थी उसमें इन्होंने बिगनिंग से पढ़ा, हर एक चीज़ ठीक थी. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. But जैसे वो लास्ट वॉल्यूम में पढ़े वहाँ पे चेंज जो है वो अकर कर गया. Reading volume 5 from both ends inward, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. That page in the book described the Battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely. अब इन्होंने अच्छी तरीके से पूरी बुक को देखा और ये वो जो पॉइंट प्रिसाइज पॉइंट जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे वो इनको मिल गया और इनको पता चला कि जब पानीपत की लड़ाई हुई थी मराठास जीते थे इस इंडिया में. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashivrao Bhau and his nephew, the younger Vishwas Rao. The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. इसने अच्छे से बताया कि अब्दाली जो हैं वो वापस से काबुल चले गए थे और बहुत अच्छी जीत हुई मराठा की. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. बहुत अच्छे से इन्होंने अकाउंट को पढ़ा. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time ever. The victory in the battle was not only a great moral booster to the The East India Company, which had been watching these developments from the sideline, got the message and temporarily shelved its expansionist program. For the Peshwar, the immediate result was an increase in the influence of Bhanu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD.
पेशवार और इन सब ने जो है अच्छे से ये सारी चीज़ों को देखा. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from state politics. To his dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना मैच लगा नई मराठा रूलर जो तब कौन बने विश्वास राव. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like its वो भी यहीं पे ही थे जैसे Portuguese and the French थे वो भी यहीं पे ही थे. For political reasons, the Peshwa kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age drawing in Europe. इन्होंने दिल्ली में जो है पेशवा ने मुगल रूलर्स को एज अ पपेट रखा हुआ था और जो यूरोप में जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो चल रहा था एडवांसमेंट उन सब का इनको भनक थी. Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. इसने aid और experts को जो है offer करा. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. The 20th century brought about further changes inspired by the West. जो 20th century थी इसमें बहुत सारे जो कहाँ से जो inspired थे from the West. Okay. India moved towards a democracy. By then, the Peshwar had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate of Delhi survived even this transition, largely because it wielded no real influence. The Sahinsha of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self respect was. From a position of strength and for purely commercial reasons, it has allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him, but at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. He went through the books and generals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhahusabhechi Bhakar. Although he seldom relied on the Bhakars for historical evidence, he found them entertaining to read. Sometimes buried in the graphic but doctorated accounts, he could stop the germ of truth. He found one now in a three-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attracted them. And God was merciful. A shot burst past his ear. Even the difference of a till would have led to his death. At 8 o'clock, at 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow? Left the table, he showed